So we'll solve this third sum. Shailesh and Shashank were partners sharing profits losses in the ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st March is given. अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट उन्होंने दिया है, तो हम लोग बैलेंसेस लिखेंगे. कैपिटल अकाउंट को 10,000, 6,000. तो कैपिटल अकाउंट को आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, 6,000. Then current account Shailesh, Shashank 3,000, 2,000. By balance brought down 3,000, 2,000. Now because we are closing this partnership, we may immediately transfer the current account to the capital account and do all the adjustment to capital account. Or you may do all adjustment to current account and at the end you will transfer it to capital. Anything is okay. तो मैं तुरंत ही ट्रांसफर कर देती हूँ. अब करंट अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं इधर बोलूंगी टू कैपिटल अकाउंट 3,000, 2,000. करंट अकाउंट विल गेट क्लोज्ड. क्योंकि डिसोल्यूशन है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप करंट अकाउंट मेंटेन करो कि नहीं करो. नहीं करने, क्योंकि वो ट्रांसफर ही कर देने हैं हम लोगों को. ओके, देन आर देयर एनी accumulated profit losses? No. Now the next thing that we'll do is we'll transfer all the assets except bank and all liabilities to realization. तो realization account में हम लोग सारे assets transfer करेंगे. तो assets कौन कौन सी है? Building, plant, debtors, stock. It is 2 building, plant, debtors, stock. 7,000, 9,000, 14,000, 5,000. I'll write it in the inner side. 7,000. Bank will not get transferred to realization. We will open bank account. हमेशा उसको इनर में ट्रांसफर करना है और आउटर में लिख देना है. I've written here 7,000 instead of 5,000. Oh, this is 7 and 9, 16, 20, 30, 35,000 के assets transfer हो गए. फिर liabilities transfer करेंगे हम लोग. Creditors and bills payable. ये भी इनर में लिखने हैं और आउटर में टोटल करके लिख देना है. 17,400, 2,600. This will be 20,000. Now, bank 6,000 opening balance. We'll open the bank account and will transfer bank because it's an asset. It will always have a debit balance. Balance brought down 6,000. Now, the firm was dissolved on above date and assets realized. Plant 8,000, building 6,000, stock 4,000, debtors 12,000. So it is 8,6,4,12. Now, if the assets are realized, entry is bank account debit to realization. So I'll write down by bank. All the assets that have realized we'll write down here. Plant, building, stock, debtors. Plant 8,000 inner मध्ये लिहिणार आपण. Building 6,000. Debtors 4,000. Sorry. Stock 4,000 about that. Stock 4,000 and debtors 12,000. This is 14, 18, 20, 30. 30,000 has been realized. आणि बँक अकाउंटच्या डेबिटला आपण टाकणार तिकडे टू रिअलायझेशन
assets are realized. अब क्योंकि ये डिसॉल्व हो रहा है तो हम लोगों ने सारे अकाउंट्स ही क्लोज कर दिए, तो डिसॉल्व हो रहा है तो इतने सारे अकाउंट्स क्यों रखने के, एक दो ही अकाउंट्स रख के उसमें ही एडजस्टमेंट कर लेने का. शैलेश agreed to pay of bills payable. So partner has taken up a liability. So in realization, partner has taken up liability will come on realization debit side to Shailesh capital account. So bills payable कितने के हैं 2600, वो पूरे शैलेश ने ले लिए हैं. See, liability get transferred to credit side, so any liability paid off or taken over by partner will come on the debit side of realization. शैलेश ला जाणार क्रेडिट ला, काय काय आहे ते, कोण शैलेश आणि शशांक आहे ना, शैलेश शशांक, तो ये होगा बाय रियलाइजेशन 2600 उसने ले लिया है लायबिलिटी को. Then next will be creditors were paid in full. Creditors are paid through realization, so it will be to bank. It will entry for paying of the creditor will be realization to bank. So creditors pay हुए 17,400 और expenses भी pay हुए हैं realization के 1,400. Realization or dissolution expenditure same, so it is 18,800. बैंक मध्ये जाईल है by realization 18,800. No other entries remaining here now. Now we'll find out realization profit loss. So it is 20,000 plus 30,000. हे असं जर इनर आणि आउटर कॉलम ठेवलं ना तर हे अशी कॅल्क्युलेशनला सोपं जातं ते, म्हणून इनर आउटर कॉलम ठेवायचं. क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन इज 50,000. अब पता नहीं है प्रॉफिट है कि लॉस है. minus 35 minus 2,600 minus 18,800. $6,400 is the realization loss. Now this loss will be given to the partners in their profit sharing ratio. This will be by partners capital Shailesh, Shashank, 6,400. त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो काय होता 3:2. सो 3:2 मध्ये शशांक को मिलेगा 2,560 आणि शैलेशला मिळेल 3,840. And here your account will get closed. This will be 56,400. This 56,400. Now we'll go to capital account. This is loss, so it will be to realization 3,840 2,560. Now the next thing that we'll do is we will close the
books 6,000 2,000 हे आलं 8,000. $8,000 मधनं 2,560 गेले. So 5440 will go to cash bank account. आता इकडे आलाय म्हणून आपण त्याला कॅश पे करतोय किंवा बैंक थ्रू पे करतोय. अगर ये इधर आता तो हम लोग उसको see if it is a credit balance, it means still there is some excess capital with the partner, so we will pay them. And if there is a debit balance, then still there is some amount which they will have to raise. तो ये पूरे है 15,600 और उसमें से ये 3,840, तो ये बचे कितने 11,760. Now see, they both are having credit balance. इसका मतलब उनका ये जो excess capital है वो उन्हें बैंक के थ्रू मिल जाएगा. तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट टू बैंक. इट मीन्स वी आर पेइंग देम द एक्सेस कैश. तो बैंक अकाउंट में जाएगा बाय शैलेश 11,760 and by Shashank 5,440. Now the important thing is your bank account should get tallied. अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो हम लोग उनको बोलते कि आप कैश लेके आओ. ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हम लोग उसे कैश दे रहे हैं. Now we'll try to balance this. This is 36,000. Now let us balance this side. It is 18,800 plus 11,760 plus 5,440. Total is 36,000. Because all the cash has been paid to the partners and the bank account is getting tallied, this means that actually it can be said in the other way around also कि हम लोग जो बैंक में जो एक्सेस कैश है वो हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे उनके रेशियो में 3:2 का ही रेशियो आ जाएगा उनका ही. ओके क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या आएगा 36,000 minus 18,800 17,200. I will distribute it to the partners in their old ratio 3:2. तो एक्चुअली वो उनको उनके बचे हुए कैपिटल के रेशियो में मिलता है तो यही आएगा उनका. तो हम लोगों ने उनको दे दिया और देन कैपिटल शुड गेट टैलीड और बैंक शुड गेट टैलीड व्हाटएवर इफ इट इज गेटिंग टैलीड. अगर आपने ऐसे बोला कि नहीं बची हुई कैश हम लोगों ने दे रहे हैं उनके कैपिटल के रेशियो में, it is also same and then you will tally the cash account, capital account, sorry. Or otherwise I will say that the capital balance is transferred to bank account and then try to tally the bank account. ये tally हो गया क्योंकि ये simple resolution है. And now our sum is done and it is correctly done because bank account is tally. अगर ये tally नहीं होता तो आपका sum गलत होता.